Hey guys, what's up? This is Suma Kothari. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely good. Finally, the wedding season is done. I am so happy. मतलब weddings में जाना बहुत अच्छी बात होती है, but इसके साथ साथ मैं थक भी गई थी. But with one vlog that I had posted, my Sangeet vlog, you guys loved the outfit that I was wearing, and in fact I did mention in that vlog कि मैं उस outfit के बारे में already एक video बनाने वाली हूँ because that's from a specific brand. So today's video is about that, and if you haven't watched my Sangeet vlog, then do give it a shot because it is Get Ready With Me plus the Sangeet vlog, and I was dancing at my friend Sangeet. So yeah, it was a really chill pill and a good vlog. Also with that, if you guys are not following me on my Instagram, dude, I do a lot of bakchodi there on my Instagram stories. So if you're not following me there, you better follow me there because you need to know a lot of stuff about me that you don't know by now. So yeah. Okay, by all of this, let's begin with today's video. So the brand that I'm going to be talking about today is Vastrakund. One thing, they only deal into semi-stitched outfit. They put up like one picture on their website and uska Semi-stitched outfit. be getting it, and their range is somewhere around from I think 1000 to 3000 something. I think that's the only range that they have. So I've got like 4 of them, 4 outfits in all, and now because I did not have the time to get it stitched, I had requested them to stitch it for me. So let's just begin the video. Okay, so the very first outfit has to be the one that I wore at the Sangeet. This is so beautiful, dude. My personal favorite is the color of this outfit. I'm really in love with it. Second, the patches right here. I mean, these like quite big patches you can see. So if you're not fond of big patches, then definitely this outfit is not for you. But if you're okay with the patchwork and everything, then please go for this outfit. I really like it. I honestly like it. So this is not a hand embroidery as far as I believe. ये machine embroidery की हुई है पूरी. But the work on the blouse is really beautiful. I think I love the blouse more. And ये जो लहंगा का ऊपर का दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. It gives a like a complete finish to the लहंगा. With that, the net cloth and everything is just nice. You can definitely add a can अंदर से and you can wear this लहंगा. तो भी बहुत ज़्यादा heavy लगेगा. I mean, of course नहीं लगेगा कि 1700 रुपये का लहंगा है. Overall, a thumbs up for this one. So next is this blue लहंगा चोली. अब इसका ब्लाउज है वो ऑफकोर्स पिक्चर से काफ़ी अलग है क्योंकि पिक्चर में आपको भी सेमी स्टिच मिलेगा. सो आई एम नॉट रियली श्योर कि पिक्चर में जो स्लीव्स दिख रही है आपको वैसे स्टिच करवाने मिल सकता है कि नहीं विद द ड्रेस मटेरियल. बट फॉर मी ये काफ़ी सिंपल ब्लाउज हुआ है स्टिच क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी अर्जेंसी में करवाया था. सो इट वाज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट. मटेरियल वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट गुड इनफ टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरेबल. तब तक सब कुछ ठीक है. बट नाउ विद द लहंगा what happened was I really did not like this part of the लहंगा, to be very honest. इससे वो काफ़ी हल्का दिख रहा था तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया था और मैंने इसको लहंगे को ऐसे पहना था तो वो काफ़ी अच्छे से टिक भी गया एंड इट वॉज लुकिंग गुड इनफ. विद दैट द रफल्स एंड एवरीथिंग ऑन द लहंगा वॉज रियली गुड. आई मीन यू कैन सी द रफल्स का शेप और सब कुछ काफ़ी अच्छे से आया है. इट इज़ नॉट वेरी हैवी लहंगा. इट इज़ अ वेरी डिसेंट एंड सिंपल लहंगा. नाउ आई एम गोना बी वेयरिंग दिस फॉर एनी ऑफ द हल्दी इवेंट्स क्योंकि हल्दी में क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आउटफिट अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे आउटफिट खराब होने के बहुत चांसेस है. सो फॉर मी दिस रियली कैन वर्क ड्यूरिंग हल्दीज. बट अपार्ट फ्रॉम एनी हल्दी फंक्शंस आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू वेयर दिस क्योंकि ये काफ़ी बेसिक आउटफिट है. सो या overall for haldi thumbs up, but apart from haldi functions I don't think I'll be wearing this outfit. But Gagra is really good. Now moving on to the next one. Next is this Georgette ka sari, green color. I really like this sari to be very honest. But first let's start with the blouse. अब pictures में जो blouse है वो काफ़ी ज़्यादा different है क्योंकि उसमें net का sleeves और सब कुछ दिया हुआ था. So you guys also have an option to chat. वहाँ पे आप chat कर सकते हो उनके website पे किसी से और उनको पूछ सकते हो कि इसमें net का material आएगा कि नहीं जैसा picture में दिखाया गया है. क्योंकि मुझे तो नहीं आया, उन्होंने इतना simple भी stitch करके दिया है तो इसमें भी net किधर use नहीं किया है. So I'm not sure कि उन्होंने मुझे डालकर नहीं दिया या सच में वैसा नहीं आएगा. So definitely just check on that. But otherwise the blouse का material is okay, not that great. Of course material में तो बहुत फ़र्क होगा क्योंकि वो लाखों के कपड़े और ये सिर्फ कुछ चंद हज़ारों के. But overall this is not that bad. I still like it. Now coming to the sari, I love the ruffles that it has and plus जो भी साइड में बॉर्डर दिया हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अब इसके पैचेस आपको थोड़े से हल्के लगेंगे आई थिंक, बट ठीक है मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा पैचेस से क्योंकि ओवरऑल साड़ी का लुक काफ़ी रिच आ रहा था. उसके रफल्स बहुत अच्छे थे. जो साड़ी का ड्रेप था एंड में वो भी काफ़ी अच्छा फ्लो था एंड overall I really like the sari to be very honest. I mean the color and everything was really beautiful. For the price that I had to pay for it, just 1500 rupees, it was damn worth it. So yeah, for me it was a thumbs up.
Next is this black sari Pariniti. Dude, Pariniti has worn and she's looking damn beautiful. And हमारे में इतना black चलता नहीं है, हम नहीं पहनते मारवाड़ियों में इतना black. But I still got this one because I thought I'll wear it for any cocktail events or something like that. So yeah. Now, firstly, इसका भी let's begin with the blouse. So इसका blouse I got exactly how it was shown in the picture. So blouse से मुझे कोई problem नहीं है. You can also get the same thing stitched. अब ये सब कुछ semi stitched होता है. I'm just repeating it one again कि सब कुछ semi stitched होता है तो yes. And ये machine embroidery है as you can see. Also with that जो इस पे ये मोती लगा है ना, थोड़े से मुझे लग रहा है कि वो मोती हल्के लग रहे हैं. अगर मोती नहीं भी लगाते तो हम कुछ अपने आप से भी आई थिंक यू कैन पुट सम स्टड्स फ्रॉम योर एंड ऑल्सो ताकि वो थोड़ा सा और हैवी लुक दे. बट ठीक है, नॉट दैट बैड. ब्लाउज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम लाइकिंग द ब्लाउज. ओवरऑल साड़ी इज ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल. द साड़ी का नेट एंड एवरीथिंग, द मटीरियल इज रियली नाइस. आई लव द साड़ी. ब्लैक कलर, आई नो आई एम नॉट गोना बी वेयरिंग इट अ लॉट बट स्टिल गुड इनफ. ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इन द साड़ी इज कि पता नहीं क्यों मैंने ब्रांड से भी बात की है बट जो मुझे साड़ी रिसीव हुई है उसका लेंथ काफ़ी कम है. सो फॉर अ हाइट ऑफ 5.4 दैट आई एम, मुझे लिटरली साड़ी थोड़ी नीचे पहननी पड़ी थी. तो अगर मुझे उसका लेंथ कम हो सकता है देन आई एम 110% श्योर कि मेरे से लंबे लोगों को तो ये साड़ी नहीं आने वाली है. सो प्लीज़ चेक विद देम वंस बिफोर बाइंग दिस साड़ी, क्योंकि आई डिड पुट अ फीडबैक टू देम कि बॉस ये साड़ी छोटी थी. अगर लोगों को मैं एडवाइस करूँगी डेफिनेटली इट्स गोना बी अ लॉस बिकॉज ये उनके पहनने में काम नहीं आएगा. सो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट द साड़ी वॉज क्वाइट डिसेंट. आई डोंट थिंक दिस वॉज टू ग्रेट. जैसी दिख रही थी पिक्चर में, आई एम नॉट दैट हैप्पी बट आई स्टिल थिंक it's not something that I would not want to buy because it's a decent साड़ी for the price that they are providing. But especially let me tell you, the pink लहंगा and the green साड़ी were my favorites. black वाला सिर्फ मुझे लेंथ की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए I don't know, just check with them once. And yellow and blue वाला the material is very ठीक ठाक वाला type, so if you want something for haldi definitely a must buy, otherwise don't. So yeah, that was my overall review for the entire all the outfits. I really hope you guys enjoyed it, and if you did or if you want me to review more of their outfits from their website, do not forget to let me know in the comment section below, or you can DM me on my Instagram. Also, I'm putting all the outfit links in the description box below so you can check them out, and I'll see you guys next time. Bye. If you're not following me on my Instagram, go and do that right away.